Hello friends, welcome all. I am Gautam Dikshit, subject matter expert. Welcome to Manu Law classes. This video covers the current affairs of the last week from 31st August to 4th September, that is Saturday 2021. We could not record the Daily Hindu analysis of these 7 days because of my unavailability and because of poor health. So in order to cover up the current affairs of the past week, so we have come up with the combined video in which I will be discussing all the important topics of the past 7 days of the past 1 week, which we could not cover in the Daily Hindu analysis. But let me remind you again that from today onwards, that is 6th September 2021 onwards, we are daily recording the Daily Hindu analysis and we are posting it on our YouTube website, which you can access. So our Daily Hindu analysis will resume from today. This video is only one time video covering the weekly current affairs because of the unavailability at the center. So let's start with the video. So let's start with the news. So the first and very important news coming is about Karbi Anglong peace deal. So before understanding what this peace deal is, we have to understand the issue, basically that what is this issue and where is this Karbi Anglong located. So Karbi Anglong is a district in Assam. As you can see, this is Assam. This yellow color which you can see on your screen is a plateau region. Okay, is a plateau region bifurcated by a river. This plateau region is divided into two, the eastern side and the western side. So if you will see, the western side called as Karbi, the eastern side is called as Anglong. This together, this region is called as Karbi Anglong. Now this Karbi Anglong, as you can see, that it makes a boundary with Nagaland. This region, I am not talking about Assam now, I am talking about only the Karbi Anglong region. So this Karbi Anglong region, a plateau region, you can say a hilly region, is making a boundary with Nagaland. Then it is making a boundary with Meghalaya. So this is Meghalaya. Right now, what is the issue, why there was a peace deal? अगर peace deal है तो इसका मतलब कि वहाँ पे वायलेंस होगा, वायलेंस हुआ होगा. अगर वायलेंस हुआ होगा तो उसका कोई रीज़न होगा. तो वायलेंस के रीजंस क्या हो सकते हैं? सो द रीजन इज दैट दिस कार्बी पीपल, they are indigenous tribals and they have their distinct language. They have their distinct language and culture. Okay, it means what? That if they have indigenous culture and distinct language, distinct culture from the mainland Assam people, so there was the demand of separate statehood. So the whole violence in Karbi Anglong district is related with the demand for the separate statehood. Now who are demanding this separate statehood? So the Karbi people are demanding this separate statehood. Now the problem got more complicated, especially after 1971, especially when, due to the Bangladesh crisis, when there was the upward movement of the people or the migration of the people towards Meghalaya, Assam and Tripura and West Bengal. So over here there is the danger of changing demographics. So this problem got more complicated because of that, but that is not a major problem. But here, like the separate statehood, demand of separate statehood was the major problem. Now why any region demands separate statehood, that why there should be a separate statehood? So that any
group of people having distinct culture, distinct language. So what happens that they want autonomy over their language, culture. So they think that separate statehood can be a guarantee to preserve the distinct language and culture. So same with the Karbi Anglong people. Now, in order to solve this problem, the tripartite agreement was signed between three entities. Now see, these three entities are very important. The first is the central government, the second is the state government of Assam, and the third one are the 5 insurgent groups. These 5 insurgent groups are Karbi Longri North Kachar Hills Liberation Front, the People's Democratic Council of Karbi Longri, the United People's Liberation Army, and the Karbi People's Liberation Tiger faction. So these are the 5 groups which have come together to sign the peace deal. Now what will be the peace deal? इस peace deal में क्या होगा? Peace deal में कुछ चीज़ें सरकार की माननी पड़ेगी और सरकार को कुछ चीज़ें इन इंसर्जेंट ग्रुप्स की माननी पड़ेंगी. So let's see. The salient features are, the first is about the development, that the center will make available a special development package of how much? Of rupees 1000 crore over the next 5 years for the Assam government to undertake the specific projects for the development of Karbi areas. Now Karbi areas are autonomous. These are autonomous councils. Autonomous councils, they are recognized in 6 schedules. Okay, so if you will see in 6th schedule, normally they are called as 6th scheduled areas or 5th scheduled areas. So the tribal areas in other states, they are governed under 5th schedule, and the tribal areas in Mizoram, Meghalaya, Assam and Tripura, MMAT, they are governed under the 6th scheduled area. So there is already a Karbi Anglong Autonomous Council under the 6th schedule of the council, but now they will be given the greater autonomy so that they can protect their identity, their language and their culture, and then they can focus the development of the council area. Now the next point, the government will set up the Karbi Welfare Council. The Karbi Welfare Council will be set up for the focused development of Karbi people who are living outside the Karbi Anglong Autonomous Council. Okay. Now the consolidated fund of the state will be augmented to supplement the resource of KAAC so that they can undertake the development functions in this area. And the most important thing is that the state government will notify Karbi as the official language of the KAAC. The hill tribes would be entitled to reservation also. Earlier the official languages were English, Assamese and Hindi. Okay, now Karbi will also be recognized as the official language. The second issue is about the edible oil prices. Now we have already discussed about the reasons that why the edible oil prices have risen in the international market and why the price is rising in the Indian market. This is just a revision type of thing, but very important things are lying over here, तो हम इसको ध्यान से देखेंगे. Now what is the issue? Let's first understand the issue of the edible oil prices. So see, in India, particularly after the first phase of COVID-19, we are seeing especially from April, May, June that the average retail prices of major edible oils have risen up by 48% over last year. Can you see 48% का मतलब almost 50% rise. कि दाम जो है वो 1.5 गुना हो गया है. जो 1 रुपये की चीज़ थी अब वो 1.5 रुपये में मिल रही है. मीन्स 1 रुपये का ऑयल अब 1.5 रुपये का मिल रहा है. Now why this surge of almost 50%? Because of increase in global prices. Second, that because of COVID-19, जैसे कि हमने डिस्कस किया था,
the COVID-19 in the second wave, it also disrupted the rural economy. So the harvesting, it got delayed. So because of that, there was a lower domestic production of soybean, which is India's largest oilseed crop. This is the first and important reason. The second is, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम क्यों बढ़ा? तो यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के दाम देखें तो एक तो क्या हुआ कि ग्लोबल रिकवरी हुई, बहुत जगह पे वैक्सीनेशन जो है उसका स्पीड बहुत फास्ट था और उस कंट्रीज़ में रिकवरी जो है बहुत तेज़ी से हुआ. जब रिकवरी बहुत तेज़ी से हुआ तो इकोनॉमी स्टार्टेड पिकिंग अप. Whenever the economy starts picking up, the demand for food, clothing and other basic necessity things, they also rise. So excessive buying of edible oil started taking place, especially by China. And then there are many major oil producers who are already producing edible oil and supplying it to the global market. They diverted their edible oil production for the production of biofuels. अब उन्होंने क्या किया कि जो उनके ऑयल पाम के प्रोडक्शन थे, जो उन्होंने पहले एक्सपोर्ट करना था, अब वो एक्सपोर्ट करने के बजाय उसके कुछ चंक्स को वो बायोफ्यूल्स बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो द सेकेंड प्रॉब्लम. नाउ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो बायोफ्यूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऑयल पाम का? सो सी मलेशिया, इंडोनेशिया, देन सोयाबीन इन US. नाउ if you will see the oil palm and soybean which have been diverted for the production of biofuels, these two type of oil, they make up to 50% of India's domestic consumption. Now the second question which must be coming into your mind is कि सर क्या हम अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते? सो नहीं करते ज़्यादा, because if you will see the third point that India currently imports about 60% of its edible oil needs. इट मीन्स 40% का जो हमारा कंजम्पशन है वो तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट 60% इम्पोर्ट कर रहे हैं. इट मीन्स व्हाट? दैट इफ द प्राइसेस इंक्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट, सो इन इंडियन मार्केट ऑल्सो द प्राइसेस विल इंक्रीज. द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर. सो नाउ व्हाट हैपेंड दैट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीज, द प्राइस इंक्रीज. सेकेंड, गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं और ड्यूटीज़ हैं, दे ऑल्सो मेक अप द मेजर चंक ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल. अब क्या गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम कर सकती है? क्या कर सकती है, बट इफ़ यू विल सी दैट वी आर इन द पोस्ट पैंडमिक रिकवरी फेज. गवर्नमेंट नीड्स मनी so that it can invest in the economy for its recovery. So government cannot go on cutting the taxes on everything. Now ये रही अभी तक की बात, बट इस पिछले हफ्ते नया क्या हुआ? पिछले हफ्ते ये नया हुआ कि एक एजम्पशन है डोमेस्टिक फ्यूचर्स मार्केट को देखते हुए कि जो दिसंबर का जो फ्यूचर मार्केट है उसको देखते हुए एक प्रेडिक्शन किया गया है कि एडिबल ऑयल प्राइसेस आर लाइकली टू डिक्लाइन बाय दिसंबर 2021. पहला रीज़न क्या है? बिकॉज जो दिसंबर फ्यूचर्स है, फ्यूचर मार्केट्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट्स होते हैं, उनके वहाँ पे प्राइस का फ्लक्चुएशन किस तरीके से उससे डिटरमाइन होता है कि आगे चल के एग्रीकल्चरल कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर. So here it is showing that the December futures for the soybean and palm oil are showing marginally declining trend, which is good for India. The second is arrival of domestic soybean crop and rabi mustard would also help to soften the prices. Rabi mustard मतलब कि अभी आप देखेंगे राबी क्रॉप मतलब जो विंटर में होते हैं, तो विंटर में वीट क्रॉप के साथ मस्टर्ड को भी सो किया जाता है. अब इनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है अप्रैल में. सो नाउ दिस मस्टर्ड इज रेडी टू रीच द मार्केट. सो हियर वंस द अवेलेबिलिटी इज देयर द प्राइसेस विल डिक्रीज. ओके, सेकेंड लेट्स टॉक अबाउट सोयाबीन. तो सोयाबीन के साथ भी क्या केस है कि नाउ हार्वेस्टिंग और इनकी हो चुकी है, नाउ दे आर रेडी टू रीच द मार्केट. सो दिस में so there will be domestic increase of this both the crops, so this will lead to price decrease. अच्छा, इसी से एक रिलेटेड न्यूज़ है. नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम में अभी रिलीज़ हुआ था, मैं आप लोगों का रिविजन करा देता हूँ. द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, इट इज़ अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹11,040 crore. It targets the
new area under oil palm production to be 6.5 lakh hectare by 2025 to 26, and in future it must go to 10 lakh hectare. It especially targets two areas, Northeast and Andaman and Nicobar Island, and along with that it also has a price discovery mechanism. Price discovery mechanism क्या होता है? So price discovery mechanism is about that farmers, if suppose they go on to sell the oil palm in the market, but what will happen that if all the oil palm are arriving in all the oils are arriving in the market at the same time, so the prices may go down enough which can hurt the farmers' profit. So in order to save the farmers from fluctuation in prices, the government will fix the price of recovery for the farmers. Now this is the chart which shows the increase in the prices. Okay, this is the increase in the prices. As you can show, the chart shows the percentage change in the all India retail price of major edible oils on September 3rd 2021 compared to the same day in 2020. So if you will just see the increase, just see the increase. The sunflower has increased by 170.89, soya 154.52, vanaspati 135, palm oil 132, mustard 174, groundnut 120.78. अब हम अफ़गानिस्तान की तरफ चलते हैं. अफ़गानिस्तान के बारे में आज के न्यूज़पेपर में भी काफ़ी अच्छा आया हुआ है. प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ ऑफ टुडे, द डेली हिंदू एनालिसिस. Now here the news was that announcement of new government in Afghanistan. Before the week before, we had discussed about the that government in Afghanistan will come, what are the pros and cons and everything. But now it is a surety that the Taliban will form a government in Afghanistan. So the major highlights are that the Mullah Baradar, who is the Taliban co-founder, he will lead the government, and he will be assisted by Mullah Muhammad Yaqub. He is the son of Mullah Omar, who is the founder of Taliban, and Sher Muhammad Abbas Tanekzai in the senior positions in the government. The related news with this was that the United Nations had already restarted the humanitarian flights to the parts of the country in Afghanistan linking Pakistani capital Islamabad with Mazar-e-Sharif in northern Afghanistan and Kandahar in the south. The purpose क्या है? Humanitarian flights to uplift the people who are stranded over there. Now there was one more news related with it, which was in news that there is a fear in India for Taliban forming the government in Afghanistan. Now what that fear is exactly? So that fear is exactly that regrouping of terrorists. Regrouping of terrorists. This is the first fear. Second, this terrorist will definitely target Kashmir. So the infiltration in Kashmir in future may increase. So this is the fear. Now the next news is about the East Economic Forum 2021. So let's study about the East Economic Forum 2021. So see, it is different from Southeast Asian Economic Forum or Asian Economic Forum. The East Economic Forum 2021, it is something which keeps Russia and Pacific Ocean in the center. So EEF is an international forum organized each year in Vladivostok in Russia. So International Economic Forum 2021. So it was first held in September 2015 at Far Eastern Federal University in Vladivostok to support the economic development of Russia's Far East and to expand international cooperation in Asian Pacific region. Now see, let me explain you what is Russia's Far East. अगर आप रशिया को देखते हो तो रशिया is
वेरी बिग कंट्री। ओके, मॉस्को जो है वो यूरोपियन पार्ट में आता है, वो रशिया के यूरोपियन पार्ट में आता है। देन यू हैव उराल माउंटेन्स, सो हियर इज सपोज मॉस्को, उराल माउंटेन्स, दिस इज साइबेरिया। यहाँ पे कहीं व्लादिवोस्टोक है। Now, because of inhospitable climate, this part of Russia is not developed. But this part of Russia can develop if it has greater connectivity with the Asian countries like Japan, India, China, and other countries. Now, this East Economic Forum tries to connect the Asian countries with the far east part of Russia. This is called as far east part of Russia, far east, very far east. Okay, so this region which is the Vladivostok, आप इसको इसका सेंटर मान सकते हैं। So Vladivostok, a city based development, can usher this area into a new reign of growth. So this is the whole target of East Economic Forum or India's Far East Look policy. So this East Economic Forum, it serves as a platform for the discussion of key issues in the world economy, regional integration, and development of new industrial and technological sectors, as well as global challenges facing Russia and other nations. Now, this forum is sponsored by organizing committee appointed by Ross Congress. Now this East Economic Forum 2021 was recently organized. Now what are the key takeaways from here? So there was a discussion about Chennai Vladivostok Maritime Corridor. So this Chennai Vladivostok Maritime Corridor is what is based on India's Far Act East policy, where India is trying to bring Russia into the Indo-Pacific region. Okay, so Chennai Vladivostok Maritime Corridor. So this connectivity project along with international north-south corridor will bring India and Russia physically closer to each other. अभी देखिए international north-south corridor, this is the corridor which connects Russia, passes through Tehran and then connects India. So Russia means it starts from Russia, then passes through Eurasia, then Middle East में क्या, Tehran, and then through Chabahar port it gets connected to Mumbai, and then from Mumbai to Chennai you have road connectivity, and then from Chennai you will get connected to Vladivostok through Chennai Vladivostok Maritime Corridor. So this will bring India physically closer to Russia. Then the next key takeaway is that one of India's biggest shipyard, which is Mazgaon Dock Limited, located in Mumbai, it will partner with Zvezda for the construction of important commercial ships in the world. Then India's Act Far East policy, which was announced in 2019. Okay, so here this policy focuses on Vladivostok, which is the important city of Russia in the Far East. So Vladivostok is truly a sangam of Eurasia and the Pacific. So if you will just see the map, you will find it out that Vladivostok is located on the Pacific coast and it is closer to Eurasia also. Okay, so Vladivostok is the confluence of Eurasia and the Pacific. From here you can go to Pacific or to Eurasia, anywhere. And then this policy has become an important part of special and privileged strategic relationship with Russia. So this policy will be in news. This can be important for this year because it has come in the news many a time. So please pay attention if anything related with it comes in future also. Then the next is about the export, which rose 45% to $33 billion. Now here let me ask you the question that why the exports are increasing. So why the exports are increasing? One of the reason I have already given you in these slides when I was discussing the edible oils. So exports are increasing just because that global demand, there is a global demand recovery.
there is a global demand recovery. So exports are increasing. Now at the same time, there is an economic recovery in India also. Economic recovery in India also. Fine. So there is a global demand recovery as well as economic recovery in India. As well as you will see that in India there is rise in inflation also. So India is witnessing both things, economic recovery as well as inflation. Our exports are increasing because of the global demand recovery. At the same time, our imports are also increasing because of economic recovery. Second, whenever inflation starts rising, the demand for gold starts increasing in the market. So you will see that the gold import will become very important, especially after COVID-19, when people have very less faith on cash and asset. So gold becomes the last resort to the Indians. So the gold import will also start rising. So over here the export has seen the rise of 45%, but as we will discuss, the import is also increasing mainly on the account of gold. Now what happens is, now you will say that how increase in inflation is linked to gold. So see, it is all about, now whenever inflation increases, what happens? The value of currency erodes. Value of currency erodes. But the value of gold will never erode. The value of gold, as the inflation starts increasing, the value of gold will also start increasing. Second important thing is that in any situation, gold can be used as a liquid for to counter any type of financial crisis. So that's why golds are preferred in a difficult times in India. So let's read it. So India's merchandise export in August has touched $33.14 billion, which is 45.17% higher than a year ago. So if we compare with August 2020, so the export has risen and it is 45. See, you can see again nearly 50% higher than a year ago, and 27.5% over the pre-pandemic level of August 2019. Now this is something very important. But the trade deficit, now what is trade deficit? Trade deficit का मतलब होता है import minus export, or a condition when import is greater than export, we call it trade deficit, and import minus export will give us the quantum of trade deficit. So the trade deficit has widened to a 4-month high. It has widened to a 4-month high, driven by a sharp uptick in gold imports. This is important. Now merchandise imports during the month, they grew. Numbers are not very important, but you should see the trend. Grew 51.47% year on year to $47 billion. Now can you see our imports are greater than export. हमारा export कितना है? $33.14 billion. हमारा import कितना है? $47 billion. मतलब इंडिया में इंपोर्ट का वैल्यू ज़्यादा है एक्सपोर्ट से. इसका मतलब इंडिया में ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड सरप्लस नहीं होगा. ट्रेड सरप्लस का मतलब जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, दैट इज ट्रेड सरप्लस. बट इंडिया इज नॉट अ ट्रेड सरप्लस कंट्री. चाइना ऑन द अदर हैंड इज अ ट्रेड सरप्लस कंट्री. India is a trade deficit country. Why? Because import is greater than export. So import has also risen, which is 18% higher than the August 2019 figure. Now the trade deficit widened 69.5%. Okay, in August 2020, gold imports stood at $3.7 billion, which is 82.22% jump in import of yellow metal, means gold, as compared to last month. So there is a huge demand of gold right now in the Indian market. Now this import of gold, is it good or bad? So it is bad, because for overall economy it is bad, because whenever people are buying gold, so they are buying from the international market. So in order to buy that gold, the India has to use the dollar to buy those gold. Once India use the dollar to buy that gold, so India is losing its dollar.
Second, whenever gold is there, gold is never used in the market in a currency form. Gold is always the gold will always be kept in a locker. It will never be used in a economy. So what happens once that the RBI is losing its dollar? Second, an asset is coming to India, but that asset has no use in economy. Okay, so here is the figure comparing both the years. So export, as you can see, exports 33.14 this year. In August 2020 it was 22.83. In August 2019 it was 25.99. Then imports, you will see it is 47.01. In 2020 it was 31.03. so see import में भी बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है. देन अगस्त के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो हाँ, पहले डिक्रीज हुआ 2020 में, फिर अगेन इंक्रीज हुआ और जो अगस्त 2019 का लेवल था उसको भी क्रॉस कर गया है. Now you must have heard about the term that most of the universities, they are going for academic credit bank. So let me first explain you what is academic credit bank. So academic credit banks are like, suppose X is a person who goes to a college, okay, suppose the college is RN college. He studies there for 2 years and he earns 48 credits. Fine. If he studies for 3 years, he will get 60 credits. But due to some reasons, X could not continue with the study. X left the study, he went for a job. After a few years, now again X wants to study. Now what X has option? Now X again has to enroll in the college. Again he has to complete the 3 years. But if there is any institution called as academic bank credit, so what happens? This academic bank credit will store the 48 credits earned by X earlier. Now if X wants to study again, X just has to study 1 more year and he will just earn the 12 credit for that year, and already he had earned 48 credit plus 12 credit, he becomes 60 credit, and now he is eligible for a degree. So X again does not have to waste his 2 years to get a degree. Only the remaining year he has to give for the education, and then he will be eligible for degree. That is possible just because of academic bank credit. There is a second case. Suppose X is from a town, he studies there for 2 years and he has earned 48 credits. But now X understands that if I want good future, I have to go to a good study in a good college in a good city, and I have to do my final year from there. But now the same thing can happen, that he has to go to that college again, enroll in that college and then study for 3 years. But in new case, what will happen? This academic bank credit ABC will store the 48 credits already earned by X in his hometown. Then suppose comes to Delhi, he studies at St. Stephen's for his last year and earns the required 12 credit. So what happens? This 12 plus 48 plus 12, X gets 60 credit and now he is graduate. Okay, so this is the benefit of academic credit banks. So academic credit banks, it allows mobility of the students. It gives them the flexibility that if for some reasons they want to give up the study for now, go and they want to do job for any reasons, family or any personal reasons, they can do so, and in future they can come and they can do their education again without compromising their earlier years or earlier earned credit.
Now there is a second concept called as glue grant. Now what is glue grant? For understanding glue grant, so let's understand glue grant. Now suppose take the case of Delhi. Delhi has already IIT Delhi. Then Delhi has many colleges. You can take St. Stephen's. Then many colleges are there. Then Delhi may have some research institutes, for example ICAR. Okay, so what happens then? We already have Delhi University. Now what happens is that there is no interconnection between IIT Delhi, St. Stephen's, ICAR, okay, and other colleges of Delhi. So what is happening in IIT Delhi? What research projects are happening in IIT Delhi? It has no concern with what is happening over here in St. Stephen's or ICAR DU. It might be possible that IIT Delhi is doing the same project which Delhi University is also doing. So it is what? It is duplication of efforts. Second thing is the wastage of money also. Now what is a glue grant? Glue grant is the grant where collaboration between these different institutions will be encouraged. That is called as glue grant. So under the glue grant, all the institutions in the same city, they will be encouraged that IIT Delhi will share its resources with St. Stephen's, ICAR will share its resources with IIT Delhi and St. Stephen's or other colleges of DU. So they will share their resources and equipment. They will follow this. They can work on same research projects, and they can also allow their students to take classes from each other. For example, if somebody in St. Stephen's want to study about physics or engineering physics, interested in that type of course, they can go in IIT Delhi and they can enroll for that course and study. Somebody in IIT Delhi wants to study something related to humanities, history, arts, culture, so they can go in St. Stephen's and they can study that. All that type of collaboration can exist. So the glue grant is given to these institutions to enhance this networking between the organizations and institutions of the same city. Now the objective is that there should not be any duplication of work, and there should be the development of complementary capacities, okay, and they should not compete with each other, but they should build on each other's expertise. Now the next news which is coming is long COVID. Now what is this long COVID? Now long COVID का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि कोविड की बीमारी बहुत लंबे समय से चल रही है ना. कोविड की बीमारी हो गई, ख़त्म हो गई, कोविड बॉडी से चले गया, बट उसके बाद भी कुछ इम्पैक्ट्स हैं बॉडी में जो लंबे समय तक रहने वाले. दोज आर कॉल्ड एज लॉन्ग कोविड. तो लॉन्ग कोविड का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे that medical care facilities across the country are now offering rehabilitation programs for COVID survivors, as there has been cases of long COVID. What is long COVID? When symptoms persist even after several weeks of the infection. कि infection होके चले गया but symptoms अभी भी है body में. ठीक है. Now what are the most common symptoms which has been observed? Those are muscle weakness, fatigue, sleep problems and hair loss. These are the major problems. Now there is a report, there are new cases coming in hospitals where COVID related development is associated with tuberculosis, fungal pneumonia and cases of increased heart rate. ठीक है ना. हार्ट रेट जो जिसको हम बीट्स पर मिनट भी कहते हैं, जो एक हेल्दी पर्सन्स में 72 पर मिनट होता है, वो सब बढ़ रहे हैं. ओके. नाउ द हॉस्पिटल्स आर आल्सो टारगेटिंग द रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम विच इंक्लूड्स फिजियोथेरेपी, फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग, pulmonologist consultation and lung function test. So this is all about the long COVID. तो लॉन्ग कोविड का यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि द सिम्टम्स परसिस्ट इवन आफ्टर सेवरल वीक्स ऑफ इन्फेक्शन. देन डिफेंस एक्सपो 2022.
सो द 12th एडिशन ऑफ द बाइनियल डिफेंस एक्सपो, बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, 12th एडिशन ऑफ बाइनियल डिफेंस एक्सपो आज नहीं होने वाला है, मार्च 10 एंड 13 2022 में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? गांधीनगर में। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। इसमें क्या होगा? डिफेंस एक्सपो है, इसका एक्सपो होगा, ठीक है। सो द डिफेंस एक्सपो दैट विल बी द इंडियाज फ्लैगशिप इवेंट विच विल शोकेस द लैंड, नेवल, एयर एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम। अब इस डिफेंस एक्सपोज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सो सी दिस इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। द डिफेंस एक्सपो 2022 it will be a hybrid business event with the exhibition planned at the helipad exhibition center and seminars at Mahatma Mandir Convention Exhibition Center। यहाँ पे एग्जिबिट किए जाते हैं अपने टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है, और इससे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए इन डिफेंस सेक्टर। The aim is to build the vision of to achieve self-reliance in defense and to make the defense export a $5 billion industry in India by 2024। ये टारगेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बाय 2024 डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को $5 बिलियन का बनाना है। जब हम अपने टेक्नोलॉजीज़ को लोगों को दिखाएंगे तभी लोगों को पता चलेगा कि इंडिया के पास कौन कौन सी अपनी टेक्नोलॉजी है, और तभी बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को एज अ पोटेंशियल सप्लायर समझेंगे, एंड देन ओनली वी कैन मेक अ सब्सटेंशियल स्ट्राइड इन डिफेंस एक्सपोर्ट। राइट नाउ वी आर इम्पोर्टिंग डिफेंस, बट इफ़ वी वांट टू मूव अप इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो हमें सेल्फ रिलायंस के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर भी ध्यान देना होगा, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022। नाउ अबाउट द जीएसटी कलेक्शंस। तो जीएसटी कलेक्शंस हम जैसे जान रहे हैं कि हमेशा 1 लाख करोड़ के ऊपर ही आ रहा है, सिर्फ जुलाई में कम आया था। सो अगस्त में भी 1.12 लाख करोड़ है, पर जुलाई से थोड़ा कम है। जुलाई में 1.16 लाख करोड़ था, जून में 1 लाख करोड़ के नीचे था, बट देन ऑल्सो 1.12 लाख करोड़ इज अबाउट ₹1 lakh crore। The Finance Ministry has said that the collections, which pertain largely to economic activity in July, indicates a fast economic recovery underway। Fast economic recovery underway। Fast economic recovery underway का मतलब कि second wave के बाद now there is the opening up of economy, okay? But there are certain people, certain economists who perceive it as a signal of अनइवन एंड वीक रिबाउंड। अनइवन एंड वीक रिबाउंड का मतलब जैसे कि देखिए मैंने आप लोगों को के शेप कर्व बताया था। के शेप कर्व में क्या होता है? कुछ कंट्रीज ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ सेक्टर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, ग्रोथ है इनका, और कुछ सेक्टर का रिसेशन अभी भी चल रहा है। ग्रोथ किसका चल रहा है? खास करके टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स, रिसेशन ब्लू कॉलर जॉब, ओके। इसी को कहते हैं अनइवन एंड वीक ग्रोथ। कि जीएसटी का कलेक्शन आ तो रहा है बट सारे सेक्टर्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जो ग्रोथ कर रहे हैं सिर्फ वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेटा। नाउ द रेवेन्यूज फॉर अगस्त 2021 were 30% हायर देन द अगस्त 2020। नाउ जीएसटी के कलेक्शंस बड़े तो हैं, बट जीएसटी में एक डेटा होता है, उस डेटा से पता चलता है कि कौन से स्टेट्स ने कितना अच्छा किया है जीएसटी के उसमें, और टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न्स को फाइल किया है कि नहीं। वो डेटा GSTR 3B करके एक रिपोर्ट होता है, उसके अंदर होता है। इसके अंदर 2 टाइप के इंफॉर्मेशन होते हैं, एक द रिटर्न्स फाइल्ड बाय टैक्स पेयर्स एंड द सेकेंड स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यूज़। ये डेटा गवर्नमेंट जनवरी के बाद से रिलीज़ नहीं कर रही है। फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त अगर हम देखें तो इसमें से सिर्फ 4 मंथ का ही डेटा जो है
शेयर किया गया है वो है फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त। ओके फाइन। तो यहाँ से हम लोगों को जो है वो पता नहीं चल रहा है कि विच स्टेट्स आर परफॉर्मिंग गुड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, विच सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग गुड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, ये जो जीएसटी कलेक्शन है ये कॉम्प्लायंस की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है या इकोनॉमिक एक्टिविटी के पिकअप करने की वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है? बट जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू जीएसटी या 3B, सो दिस थिंग इट कुड नॉट बी मेड आउट। देन देयर वाज द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जब कोई दोनों डोज या कंप्लीट डोज लेने के बाद, कोविड-19 का कंप्लीट डोज लेने के बाद भी अगर बीमार पड़ जाए तो उसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस कहते हैं। तो इंसाकॉग एक बॉडी है। इंसाकॉग इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ लेबोरेटरीज कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इंसाकॉग एक लेबोरेटरी है, ये स्टडी करती है अबाउट द न्यू एमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ कोरोना, सेरो स्टडीज़, ये सारे कुछ यहाँ पे इंसाकॉग में किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू इट there is the rising number of breakthrough infections, but these numbers are on expected lines. okay, इसलिए कहा जा रहा है इंसाकॉग की तरफ से। सेकेंड, द रिपोर्ट इज सेइंग दैट देयर इज अ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स है वो 70 से 90% है, बट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केस में स्पेशली विच आर रिलेटेड टू न्यू वेरिएंट्स ऑफ डेल्टा, जैसे कि हम जानते हैं AY.1, AY.2, AY.3, AY.12। तो दिस वेरिएंट्स जो हैं यहाँ जब ये अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को तो इनकी एफिकेसी जो है वो कम होते चली जा रही है। सेकेंड है कि देयर वाज अ स्टडी बाय द साइंटिस्ट एट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड मैक्स हॉस्पिटल इन दिल्ली। दे हैव रिवील्ड दैट nearly 1/4 of 600 fully vaccinated health workers were reinfected। 600 में से करीब 150 हेल्थ वर्कर्स, जो 600 फुल्ली वैक्सीनेटेड हेल्थ वर्कर्स थे उसमें से 150 वर्कर्स लोग फिर से री इन्फेक्ट हो गए, जिसको कुछ नहीं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस कहते हैं। ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो क्यों नहीं इतना ज़्यादा? बिकॉज ऑफ द एमरजेंस ऑफ न्यू डेल्टा वेरिएंट्स। जैसे कि अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो B.1.617.2 को हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं। अब इसके सब लिनिएजेस हैं B.1.617.2.1.2.3, इसको हम AY.1, AY.2, AY.3 कहते हैं। इसमें से सबसे घातक यही पाया गया है AY.2। ओके, then the next one very important again is Zapad exercise. So Zapad exercise, Zapad 2021, it is a theater level exercise of Russian armed force। theater level exercise, theater level में क्या होता है कि there will be theater based on threat perception। so in India also there is a theater commands coming up। एक तो अंडमान एंड निकोबार है, फिर दूसरा मैरीटाइम है, ठीक है, लैंड है, एयर है, फिर 2 बॉर्डर बेस होंगे। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिएटर लेवल कमांड्स कमिंग अप इन इंडिया। सो द Zapad 2021 is a theater level exercise of Russian armed forces। so it focuses on operations against terrorists। now there is one battalion which is called as a Naga battalion group, it participating in the exercise। it will feature an arms combined task force। what is the main aim of the exercise? to enhance military and strategic ties among the participating nations। now who are the participating nations? Mongolia, Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Serbia, Russia, India and Belarus। see, India is the participating country। then observer countries: Pakistan, China, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Myanmar, Uzbekistan and Sri Lanka। then UNSC resolution 2593 कतार दोहा एग्रीमेंट, उसका एक पॉइंट था कि द तालिबान विल नॉट अलाउ द अफगान टेरिटरी टू बी यूज्ड बाय अदर टेररिस्ट ग्रुप फॉर लॉन्चिंग टेरर अटैक्स
ऑन डिफरेंट कंट्रीज इन द रीजन ऑफ अफगानिस्तान। तो उसी के बेस पे एक ये यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 आया हुआ है। देखिए रेजोल्यूशन क्या डिमांड करता है। द रेजोल्यूशन डिमांड्स दैट अफगान टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री और टू शेल्टर एंड ट्रेन टेररिस्ट एंड टू प्लान और फाइनेंस द टेररिस्ट अटैक्स। ठीक है ना, ये दोहा एग्रीमेंट का एक क्लॉज भी था जो यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593 में लिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको यूएस सपोर्ट करेगा ना। देखिए यहाँ पे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इंडिया के लिए कंसर्न है, जो पहले से रिजोल्यूशन 1267 में मैंशनड है। अब उनका यहाँ पे नाम लिया गया है कि इट स्पेशली मेंशंस द टेररिस्ट ग्रुप्स लाइक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। Okay, these are the terrorist groups which are mentioned in this group. Did all P5 members, P5 members हमारे कौन कौन से होते हैं? हमारे P5 members होते हैं यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना, हमारे P5 मेंबर्स होते हैं। इन सारे P5 मेंबर्स में से 2 P5 मेंबर्स ने इस रेजोल्यूशन पे वोट नहीं किया। वो कौन कौन से थे? रशिया और चाइना, इन्होंने एब्सटेन किया। ओके, सो व्हाई दे एब्सटेन? बिकॉज दे वांटेड ऑल द ग्रुप्स। कि इंडिया ने से इन ग्रुप्स को मेंशन किया था जो इंडिया के लिए डेंजरस हैं, बट कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनका मेंशन नहीं किया गया, जैसे कि इस्लामिक स्टेट। अभी जैसे कि हम आप लोगों ने सुना होगा जो काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था, वो तालिबान ने किया था? नहीं, वो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस ISKP उसने किया था। एंड देन देयर इज़ वन टेररिस्ट मूवमेंट एक्टिव इन जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना विच इज कॉल्ड एज योगिर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। दे वांट डिफरेंट कंट्री कॉल्ड एज तुर्किस्तान फॉर देमसेल्फ from China. Okay. Now about India's GDP, which was again in the news, that India's gross domestic product it grew by 20.1%। आज के पेपर में जब आप देखेंगे तो एक बेस ईयर के बारे में इंफोग्राफिक आया है। So see here now you will be very elated, very happy that okay India's gross domestic product has grew by 20.1% in the first quarter of 2021-22। फर्स्ट क्वार्टर बोले तो मार्च के बाद, मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म का होता है, अप्रैल 1 से चालू होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ अप्रैल, मई, जून, दे आर द फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर इज द सेकेंड क्वार्टर। सो फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया GDP ग्रू बाई 20.1%। ओके, अच्छा, अगर हम लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्शन देखें तो कितना था? लास्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्शन था 24.4%। ओके, बट द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन वेल बिलो द प्री पेंडेमिक लेवल। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? एक जगह पे तो इकोनॉमिक द GDP इज ग्रोइंग बाई 20.1% और दूसरी जगह पे आप ये यहाँ पे लिखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन well below the pre-pandemic level. So how is this possible? This is possible because we have very low base. अगर हम अपने आप को पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई नहीं। That's why we had a contraction of 24.4%. बट इस साल थोड़ी सी हुई। तो अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल देखेंगे तो जो थोड़ा सा भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पिछले साल वो भी नहीं हो रहा था। So that's why if we compare this year's number with the last year, we will get very big figure, that is 20.1%. But if you will see the real output, so it will be well below the pre-pandemic level. This is called as base effect. This is called as base effect. Okay, fine. The next is the gross value added. Gross value added मतलब ये एक टाइप का GDP मेजर करने का तरीका होता है, दैट GDP मेजर बाय वैल्यू एडिशन एट एवरी स्टेज। वैल्यू एडिशन एट एवरी स्टेज। सो ग्रॉस वैल्यू एडेड ड्यूरिंग अप्रैल टू जून इट रोज टू 18.8% फ्रॉम 22.2% डिप इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020।
लास्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो GVA फ्रॉम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग दैट द ओनली सेक्टर टू ग्रो amid लास्ट ईयर्स नेशनल लॉकडाउन एंड दे पिक्ड अप द पेस टू ग्रो 4.5% दिस ईयर। पिछले साल की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग ने ही सिर्फ ग्रोथ दिखाई थी, ठीक है। और उन्होंने इस साल जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा दिखाया। पिछले साल दे ग्रू ओनली बाय 3.5%, but this year they grew by 4.5%. Then the next is that electricity, gas, water supply and other utility services whose gross value added grew 14.3% in 2021-22 compared with 9.9% fall, मतलब -9.9%। तो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विसेज हैव ग्रोन वेरी फास्ट। Okay, now this is a corridor now which is China has created from Chengdu in China, Chengdu, Singapore and then Yangon in Myanmar. It means that if now China wants to access Bay of Bengal and South Indian Ocean, so China does not has to come through Strait of Malacca, and China does not have to come through South China Sea and then Strait of Malacca. No, China will directly use this to reach Bay of Bengal and Indian Ocean. मतलब क्या? China has created a diversion from Strait of Malacca. Now it does not need Strait of Malacca to transport the good. So this is the trade corridor composed of रेल लिंक, ठीक है ना, रेल सी लिंक, रेल लिंक का कॉम्बिनेशन है इसमें। Okay, so see, it is a railroad link. China has launched a new road link from Myanmar border to the key commercial hub of Chengdu in western China, and it connects three important cities, countries which are Singapore, Myanmar and China. And along with that, China has another plan to develop the port of Kyaukphyu in the Rakhine state, but क्योंकि म्यांमार का भी पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा है तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट डिले हो गया है। ओके, नाउ सी, नाउ इज दिस द ओनली थिंग विच चाइना वांट्स टू डेवलप? नो, चाइना इज ऑल्सो लुकिंग एट डेवलपिंग द ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है ना। जिंगजियांग से एक रोड चलेगा सीधा, वो ग्वादार को कनेक्ट करेगा। सो हियर इज चाइना, पाकिस्तान, suppose this is India, and I just draw the border. So there will be a road from Xinjiang province of northwest province of China directly connecting Gwadar port in Pakistan. So from here also the China can access the Arabian Sea and Indian Ocean. So right now what China is doing, China is bypassing the Strait of Malacca, South China Sea and those lanes where China has problem with other countries. Okay, so Gwadar is being developed as the part of China-Pakistan economic corridor to the far western Xinjiang province. The next news is core sector growth. Now there are 8 core sectors in India. Okay, out of that the core sectors growth, they grew by 9.4%. Now see, core sector क्या का कॉन्सेप्ट समझ लो। पहली बात तो इनका नाम समझो, इनको हम कहते हैं कोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कोर सेक्टर का इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर? इट मीन्स अदर इंडस्ट्रीज use their finished product as raw material, use their finished product as raw material. Okay, so some of the examples are like steel, electricity, crude oil, petroleum and refinery, then fertilizer, cement, natural gas, coal,
These are core sectors. Okay, so now if the output of core sector increases, it means the industrial activity in India is picking up. And if the core sector growth is declining, it is in deceleration. Okay, it means the industrial activity in India is declining. But over here, now what the data is saying now, that the output from India's 8 core sector is now increasing by 9.5% in July on a year to year basis. ओके, जून में ये 9.3 था, जुलाई में ये 9.4 हो गया. इसमें से डिक्लाइन सिर्फ क्रूड ऑयल ने देखा जिसका आउटपुट श्रिंक हुआ. उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस में हुआ? सीमेंट में हुआ. सो द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इट ग्रू बाई 18.9%, कोल का 18.7%. सीधा सीधा इसका इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे होता है. And steel and electricity saw output expanded by 9.3% and 9% respectively. It means that the industrial activity in India is now picking up. GST collection picking up, industrial activity picking up, export picking up. So this shows that yes, now we are on a V-shaped recovery. नाउ दीज आर द पॉइंटर्स. पूरे एक हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स आए थे और उनको मैं डिस्कस करूँगा. सो जस्टिस मिस मंजुला चेल्लूर, शी इज़ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट. शी वॉज अपॉइंटेड बाय द कलकत्ता हाई कोर्ट टू मॉनिटर द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू प्रोब पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल. देन द आर्मी, इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड आर एक्सरसाइज with armored elements in the super high altitude area, जिसको SHAA कहते हैं, super high altitude area of Ladakh under the aegis of Leh based 14 corps. यहाँ पे स्पेशल ब्रिगेड फंक्शन करता है इतने हाई एल्टीट्यूड पे, जिसका नाम है द स्नो लेपर्ड ब्रिगेड, which is located at Neoma, very close to Chushul range. It was one of the range which was in conflict with China. Then India and the United States have signed a project agreement on July 30 for an air-launched unmanned aerial vehicle under the ambit of the Defense Technology and Trade Initiative (DTII). The PA outlines the collaboration between Air Force Research Laboratory, Indian Air Force, and Defense Research and Development Organization. The next is very important. Hyderabad based pharmaceutical company Biological E Limited has been approved by the Drugs Controller General of India to conduct further trial of its vaccine on children and adolescent. वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स. सबसे पहले किसको मिला है? जाइडस कैडिला को और जाइडस कोवी वैक्सीन. ओके, कोवैक्सीन को भी मिल चुका है टू डू दिस ट्रायल्स. Then Indian biologist Shailendra Singh has been awarded the Bhaler Turtle Conservation Award for bringing 3 critically endangered turtle conservation species back from the brink of extinction. Important. Then North Korea rejects Chinese vaccines according to UNICEF. Then the Mathur Gram Panchayat in Kerala's Palakkad district has become the first local body in the country to ban the use of salutations like sir and madam. Then there was a deficit of monsoon of 24%. अब आप क्या बोले 24% कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो 24% कैलकुलेट करते हैं हम लॉन्ग टर्म एवरेज लेते हैं रेनफॉल का. लॉन्ग टर्म एवरेज का मतलब 30 ईयर्स का एवरेज हम लेते हैं कि 30 ईयर्स में कितनी बारिश हुई. उसके हिसाब से हम देखते हैं कि फिर इस साल कितनी बारिश होगी. तो एक लॉन्ग टर्म एवरेज आ गया. फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इस लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से 100% है या लेस देन 100% है या मोर देन 100% है. सो अगस्त के महीने में इट वाज डेफिसिट मानसून. वाई? क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से देयर वाज अ डेफिसिट ऑफ 24%. बट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज सेड दैट इन सितंबर देयर विल बी अबव नॉर्मल मानसून. ओके, एंड द होल मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर विल एंड एज द लोअर एंड ऑफ नॉर्मल. लोअर एंड ऑफ नॉर्मल का मतलब नॉर्मल से थोड़ा कम. उसके बाद हमारे देश में देयर आर 4 फुल्ली फंक्शनल
and operational railway networks in mountains and hilly terrains in India। ये न्यूज़ रिलेटेड है कि जब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ इस चीज़ को लेके। सो देर आर 4 माउंटेन रेलवेज इन इंडिया। द फर्स्ट इज द दार्जिलिंग Himalayan Railway located in the foothills of the Himalayas in West Bengal, Nilgiris in Tamil Nadu, Kalka Shimla in Himachal Pradesh, and Matheran Railway in Maharashtra. So I hope through this video I have covered all the important current affairs of the last week which I could not cover due to my unavailability. And once again I want to remind you that we have already started with our daily Hindu news analysis from today, which you can find on our website. So please do visit our website and have a nice day. All the best. Thank you.